Good evening to all of you. Is this audible? Visible? Audible? Visible? All clear? केमती अछंती कोन समस्त? How are you all? केमती अछंती? ना ऑलरेडी हमें बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक मेंस ପାଇଁ डिस्कस करि सारिचे एई सीरीज रे मु इंटरनल सिक्योरिटी डिस्कस करिचे वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट फॉर जीएस पेपर 3 अपार्ट फ्रॉम जीएस 3 मु स्टार्ट करिचे सॉरी इंटरनल सिक्योरिटी स्टार्ट करिचे रिसेंटली इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट another important subject लास्ट इंपोर्टेंट तीन टा चार क्लास हमें करी सारी ऑलरेडी आज आउ कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक को जी आई एक्सपेक्ट समस्त पुराना क्लास एंड लास्ट जो चारिटा क्लास था ये बहुत रिलेवेंट क्लास बहुत इंपोर्टेंट क्लास थिला फॉर इकोनॉमिक्स ओसीएस मेंस एग्जाम पे ओडिसा रिलेटेड बहुत डाटा देथिली करंट अफेयर पूरा करंट अफेयर रिलेटेड क्लास ही हमें करू नहीं पूरा करंट अफेयर रिलेटेड क्लास ही हमें करूचे जो टॉपिक पढ़ाऊची जो टॉपिक मु डिस्कस करूची को टाइप रो टॉपिक करंट इश्यू बेस्ड टॉपिक यदि किसी डाउट अच्छी कहार पुराना क्लास मानकर पचार चाहते पचार किसी पचार चाहते किसी क्वेश्चन के करने चाहते नो बहुत बढ़िया सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट वेरी गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू नो क्वेश्चन बहुत बढ़िया ताले समस्त सब बुझी गले जहाँ जहाँ टॉपिक आम पढ़ी थे आज पर्यटन कौन कौन टॉपिक आम पढ़ी सारे को टॉपिक ऊपर आम डिस्कशन थिला बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स मु पढ़ी ऑलरेडी बा इंडियन इकोनॉमी एट अ ग्लांस इंडियन इकोनॉमी एट अ ग्लांस ये टॉपिक आम देखी सारी ग्रोथ डेवलपमेंट हैप्पीनेस देखीचे फॉर्म फिलअप काली कौन पाई ग्रोथ डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस ऊपर डिस्कशन करिछि ऑलरेडी है आउ कौन टॉपिक डिस्कस करछे हमें ऑलरेडी पूर्व आउ को टॉपिक डिस्कस होइछि आज बहुत बढ़िया टॉपिक अछि बैंकिंग सेक्टर ऊपर डिस्कस करी तो इंडियन इकोनॉमी एट अ ग्लांस देखीचे ग्रोथ डेवलपमेंट हैप्पीनेस तापर सेकंड क्लास रे देखिले गत काली कौन देखिले पॉवर्टी रिलेटेड इश्यूज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कौन देखिले ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट देखिले थर्ड टॉपिक एवं आजिर इंपोर्टेंट टॉपिक होची ऑन बैंकिंग सेक्टर बैंकिंग इन इंडिया बैंकिंग इन इंडिया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कौन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सब टॉपिक आम आज क्लास रे देखिबा यू रेडी आर यू रेडी फॉर द सेशन पेन पेपर नहीं कि बसिचंदी समस्ते पेन पेपर नहीं कि समस्ते बसिचंदी
बहुत बढ़िया। Now question answer format रे discuss करेंगे। First question, discuss digital payment revolution in India. Discuss history of digital payment revolution in India. Now what is digital payment? तो आगु कुछ आगु छोट छोट कॉन्सेप्ट केतरा मने पके देबी। गोटे थिला फियाट मनी। फियाट मनी कोन? फियाट मनी रो अर्थ where there is a backup, where there is a government, जोटी गवर्नमेंट बैकअप अछि ताको हम कहू कोन ना फियाट मनी। बुझियला? फियाट मनी कोन ना when there is a government backup, जोटी गवर्नमेंट बैकअप अछि हमें ताको फियाट मनी बोली कहूचे। क्लियर? जोटी गवर्नमेंट बैकअप अछि हमें ताको फियाट मनी बोली कहूचे। फर्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। नाउ लीगल टेंडर कोन? What is the legal tender? What is the legal tender? Legal tender कहले हमें कोन बुझे? जहाँ को दिया जाए which you cannot give back as a repayment of loan. लोन रिपेमेंट रे मनकर मु आपन 10,000 टंका नै छी एवं टंका देली 10,000 टंका रिपेमेंट ऑफ, दिस इज गिवन फॉर रिपेमेंट ऑफ लोन, दिस इज गिवन फॉर रिपेमेंट ऑफ लोन है। लोन रिपेमेंट पे याको यूज करा जाए। कोन कर एटा कोन पे करा जाए ना, इट इज गिवन फॉर रिपेमेंट ऑफ लोन, लोन रिपेमेंट पे यूज करि परिबा। लीगल टेंडर गला, फियाट मनी गला। ना मते आ गोटे पॉइंट कहि देनु, मनी रो बेसिक, व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी। मनी रो बेसिक फंक्शन और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कोन? मनी रो बेसिक फंक्शन और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कोन? दिस इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दिस इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कहीं यूज कर जाको आप हम यूज करछे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज हिसाब रे यूज करा जाउछ माने मनी को यूज करके हम एक्सचेंज करूछे। इट इज यूज्ड इन ट्रांजैक्शंस। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मींस इट इज यूज्ड इन, दिस इज यूज्ड इन ट्रांजैक्शंस। एको ट्रांजैक्शन में यूज करा जाउछ हैला। बहुत बढ़िया। Now nowadays money टाको हमें रिप्लेस कोथरे कर देछि ना, it has been replaced with digital currency. It has been replaced with कोन जे को कोथरे रिप्लेस करा जे, it has been replaced with digital currency. Now digital currency कोन? तुम यूपीआई कोइ पर यूपीआई पेमेंट होछि या तो क्रिप्टो करेंसी गुडा कर कथा मध्ये आसुछि। ऑनलाइन पेमेंट करा जाई पारुछि, फिजिकल मनी यूज न करना। ऑनलाइन पेमेंट कले जोटा एनपीसीआई अछि, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, द यूपीआई पेमेंट करूछि। एठी ऑनलाइन पेमेंट रो बेनिफिट कोन ना, एक्चुअल मनी ट्रांसफर होइनी, ये खाली अकाउंट रे शो करूछि कि मो अकाउंट रो 10,000 मु पठेली आपन का अकाउंट को, ये खाली अकाउंट रे अमाउंट शो करूछि, बट एक्चुअली देयर इज नो फिजिकल मूवमेंट ऑफ मनी। एक्चुअली जदि हम देखिया, देयर इज नो फिजिकल मूवमेंट ऑफ मनी। मनी रो फिजिकल मूवमेंट होउछि कि होउनी? कोन कहल मनी रो फिजिकल मूवमेंट होउछि कि? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, देयर इज नो फिजिकल मूवमेंट ऑफ मनी। So no physical movement of money, very simple concept. तला आसा डिजिटल पेमेंट रिवॉल्यूशन को आसे हम देखो डिजिटल पेमेंट देखिए एबे इंडिया रे बाहर गोटे छोट दुकान को जे चा पीवा पई ता पाखरे गोटे स्कैनर लागि थि, गोटे छोट दुकान को जे पॉइंटे पीवा पई पानटे किनिया पई ता पाखरे स्कैनर लागि थि। सो इट शोज इंडिया इज डेवलपिंग and India is having a revolution in the field of technology. India is having a revolution in the field of technology. Technology field re India revolution hochi. So revolution has transformed financial landscape.
It has transformed the financial landscape, making transactions faster, more secure and accessible to millions of citizens. मते को डिजिटल पेमेंट हवा द्वारा बेनिफिट कौन है? एक्सेसिबिलिटी बढ़ी जाइए, फाइनेंशियल इंक्लूजन है कि नहीं? Everyone is having a bank account. Everyone in the economy is having a bank account. समस्त पाखे गोटे बैंक अकाउंट अच्छे. So accessible एवं इजी हो जाइए मनी ट्रांसफर करिया. तो यूपीआई emerged as the backbone of transformation. Now highest record हमको देखिया को मिलुची, highest record देखिया को मिलुची कहार? Payment revolution in the field of in the year 2025. In the year केबे ना 2025. बुझिएला? Now intro part रे कौन लिखिए first आसिला? मु कौन कहती इंट्रोडक्शन में कौन लिखिए एटी? Your introduction, whatever you are writing, that should be mirror to your answer. That should be mirror to your answer. याको अपन strengthen करिवे किछि डाटा देकी, किछि फैक्ट फिगर देकी. कौन करिया दरकार एटी? एटा आंसर को स्ट्रेंथेन करिया दरकार सबले. कौन कहछि आंसर को स्ट्रेंथेन करिया दरकार? फैक्ट फिगर डाटा देकी स्ट्रेंथेन करियो. तो एटी देखिले एटी दिया जाय 2025 रे हाईएस्ट ट्रांजैक्शन रेकर्ड. एवं एटू कीवर्ड भी यूज कर पारे और some definition कीवर्ड ये सब को यूज कर पारे ना. देखो एटी ये जो इंट्रोडक्शन देछि, इंट्रोडक्शन ये सब यूज हेछि कि नहीं? ना मु ऑलरेडी कहि साथि द क्लास इज अबाउट आंसर राइटिंग टिप्स एंड टेक्निक्स. दिस इज नॉट अबाउट कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस. कौन लिखिले मार्क पाइबे ए क्लास रे हम डिस्कस करछे. को पॉइंट लिखिले मार्क पाइबे हमें सही पॉइंट को डिस्कस करछे ना. पाठ तो हमें पढ़ी छ ऑलरेडी. प्री-कॉम मेंस क्लास रे मु पढ़ाई छी, डिस्कस करी छी ऑलरेडी. बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी डिस्कस्ड. Basic concepts are already discussed. Clear? Introduction लिखिए वो. Next. Now, what are the key drivers of revolution? What are key drivers of revolution? What are key drivers of revolution? Now, what are the government initiatives? को point एटे लिखिया. Government ए बाबद रे कौन initiative नहीं चलती? Technological advancement कौन अच्छे हम पाखरे? Fintech ecosystem कौन इंडिया? ये तीनटा point हमको most important point लिखिया पड़ियो. ये तीनटा point ऊपर एटे पूरा discussion करिया पड़ियो हम. ना? तो first लिखिया government initiative. ना government initiative कौन अच्छे एटी मते को? कौन अच्छे government initiative? Now there are programs like Digital India, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना. Now this is for financial inclusion. PMJDY এটা কোন মানে? This is for financial inclusion. কই অলরেডি no frill account create to খুলুছিল. No frill account, frill মানে luxury, no luxury account. বা আকো যে BSBDA, basic saving bank deposit account, basic saving bank deposit account. बुझिला? So government initiative now these digital India scheme, प्रधानमंत्री जन धन योजना, they play crucial role in expanding financial inclusion and digital adoption. They play crucial role in digital adoption. एमाने डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करिया को सिखौचंती. डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करिया को सिखौचंती एवं पेमेंट मेथड को डिजिटलाइज करिया पई चाहउछन. बुझिला? पेमेंट मेथड को कंप्लीटली डिजिटलाइज करिया को चाहउछन. क्लियर? गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स. Clear government initiatives. And the next is technological advancement. Technological advancement. Technological advancement रे कोन देखुछे? Technological advancement. Technological advancement means what are the instruments we have?
कौन कौन इंस्ट्रूमेंट अच्छी कौन कौन इलेक्ट्रोनिक गैजेट अच्छी आम पाखे जहाँ को यूज करके आम जहाँ को कौन जहाँ को यूज करके डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज कर पारिबा इंटरनेट को कनेक्ट कर पारिबा फर्स्ट व्हाट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज स्मार्टफोन पेनिट्रेशन इंटरनेट कनेक्शन इनोवेशन सच एज बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पिनलेस पेमेंट क्यूआर कोड है so ये सब आवश्यकता अच्छी now these are the basic requirements these are basic requirements बुझिला then the next is fintech ecosystem ये कौन कहूँ the entry of fintech ecosystem in financial technology company fintech means financial technology companies and development of digital wallet UPI digital wallet रो किसी example दे परिवे किसी digital wallet रो example देलो फोन पे ना गूगल पे नुहे ये सब digital wallet वा WhatsApp रे मध्य पेमेंट करि परिवे वर्तमान then UPI system UPI means UPI ID UPI system we are using UPI ID unique ID बा unique number unique ID और unique number देखो ना UPI ID number @ICICI your number 1234567 @SBI @YBL है ना @Kotak @YBL @Kotak ठीक अच्छे क्लियर नेक्स्ट चलो बुझिला व्हाट आर द की ड्राइवर्स ऑफ रिवॉल्यूशन कौन दरकार हमको डिजिटल पेमेंट रिवॉल्यूशन पे व्हाट आर की ड्राइवर्स को फैक्टर हमको दरकार डिजिटल पेमेंट रिवॉल्यूशन पे फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट स्कीम मान ऊपर मैं ऑलरेडी कहली डिजिटल पेमेंट डीबीटी गुडा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी यारी माध्यम रे आसुछ सब्सिडी गुडा भी यारी माध्यम रे आसुछ नुहे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रे कहली बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पिनलेस पेमेंट एंड ऑल दोस फिनटेक इकोसिस्टम कथा कहली एंड बहुत गुडे कंपनी खोली गलेनी ऑलरेडी पेमेंट करिया पई ऑनलाइन पेमेंट करिया पई बहुत गुडे फिनटेक कंपनी खोली गलेनी नेक्स्ट इज व्हाट आर द इंपैक्ट एंड ट्रेंड ट्रांजैक्शन रे ग्रोथ होउची कि नै एटी यस ट्रांजैक्शन ग्रोथ इज इंपैक्ट कोन ट्रांजैक्शन बढ़ी छी UPI transactions are increasing day by day UPI transactions are increasing day by day so value exceeding 24.8 lakh crore so it shows widespread adoption of digital payment then merchant adoption कौन now UPI QR code more than doubled reaching 678 million by June 2025 now देखो पूरा recent data देछि by June 2025 केते यूज होछि ना 678 million POS terminal increase होछि to 11.2 million है ना merchant adoption भी बढ़ी छि merchant माने यूज करथिन अधिक ए पेमेंट सिस्टम then financial inclusion so digital payments have empowered previously unbanked population financial inclusion means including those who are not inside the financial transactions so making the financial transactions reachable to everyone making it accessible and affordable for everyone that is financial inclusion in consumer behavior जदि हमें देखिबा एटी कोन हिची consumer behavior the average transaction size declined indicating a shift towards frequent low value digital payment now low value payment पई कोन यूज करा जाउछ consumer behavior कोन
गोटे छोट चा पील जलखिया खाइल कौन यूज कर जनरली आम क्यूआर कोड स्कैन कर दौर ना हाई वैल्यू पेमेंट गुड़ाक 5,000 10,000 20,000 50,000 जिनस किणुचे प्रोडक्ट there we are using either credit card or net banking or debit card. Now this is the consumer behavior. This is the impact and trend. Clear? What are the impact and trend of digital payment system in India? Impact and trend of digital payment system in India बुझिला. Next हमें देखिए what are the benefits and challenges. ये पॉइंट हमको सब लिखियो पड़ियो. कौन लिखियो पड़ियो हमको बेनिफिट कौन और चैलेंज कौन. Now benefit रे हमें लाभ पाउ जे कौन. These are convenience, easy to use. Easy to use हाँ कि नहीं. Security, two-way security. Security कहते हैं ना two-way security. थारे login करिवो मो यूजर आईडी पासवर्ड देकी फोन पे आइदर फिंगरप्रिंट और पिन देकी करियो देन पेमेंट कला को आउथरे करियो आउथरे दबो पासवर्ड. So it is secure, transparent. केते टंगा गला रहिला you can check everything. You can check everything. Ease of tracking finance. Easily finance को ट्रैक करि परियो केते टंगा कोडी खर्च होला. Tax payment को इजी करियो. Government monitoring of economic activity. Now you cannot evade. बुझु चेवडा सब आपण बाहर को जाई परनी. You cannot evade. Everything is on record. कौन पाई कहले this is everything is on record. बुझिला कौन कहले everything is on record. These are the benefits. What are the challenges? What are the challenges? What are the challenges? कौन प्रॉब्लम हमको ये देखिया कोन रैपिड ग्रोथ. Despite rapid growth, issues कौन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप. Now rural area रे आपको यूज करा जाउन because lack of internet, lack of 24/7 electricity नहीं. 24/7 electricity, internet facility, absence of internet facility, no access to mobile phone, no access to mobile phone. बुझिला. Then cyber security threats. Cyber security means you are not secure in the cyberspace. Cyber security threat रे कौन देखुचे? You are not secure in cyberspace. You are not secure in cyberspace. We are not secure in the cyberspace. Cyber security threat देखिए कौन चा. Need for further inclusivity. More inclusivity is required. कौन को need for further inclusivity. More inclusivity is required. बुझिला. No, these are the challenges का पाइन for policymakers as well as financial institutions. For policymakers as well as financial institutions. Is this clear? Is this clear or any doubt? Is this clear or any doubt? I think it is clear. है ना? Everyone clear? Clear आगो जीवा. All right. Next question, next topic को जीवा. ताले digital payment ऊपर किसी भी question आसले लिखियो. This is how you have to write. Digital payment ऊपर किसी भी question आसले लिखियो. Next, financial system. यदि question आसे simple question यदि आसे financial system को explain करिया पाई बा describe करिया पाई. Now एटी हुए कौन फाइनेंस रे हुए कौन फाइनेंशियल सिस्टम रे आवश्यकता कौन.
Now in the economy there are two type of people. One is money surplus or fund surplus. Money surplus or fund surplus. आउ गोटे हेले किए ना मनी डेफिसिट. मनी डेफिसिट ये कौन चाहे मनी सरप्लस कौन चाहूँ ना मनी सरप्लस चाहूँ मनी टाको पार करियो मनी डेफिसिट चाहूँ जनकठू टंका ने ये चाहूँ टंका ने ये ताको दउची टंका दबो ये ताको इंटरेस्ट दबो ता बदल ना एटा पूर्वर भी तो थिला सेम जिंस मनी लेंडर थिले एमती टंका दिया निया होतला एंड मनी लेंडर एक्सप्लोइट करथिला तो ये मनी लेंडर एक्सप्लोइट न करू सेति पई करला मझिरे गोटे मिडिल मैन पळे आसला किए जो कहले में बैंक. सो बैंक रे ये ता टंका टाको सेव करिवो ए माने बैंक टू लोन ने. So bank will work as an intermediate here. कौन कहले बैंक रो basic function कौन? Here bank will act as an intermediate. बैंक एटी simply intermediate हिसाब रे काम करियो. हैला? Okay. Well, financial system रे किए रहले ना there are different financial service. कौन service? मु कहबी loan. Financial service रे किया छै ना loan गोटे financial service के नै. Loan गोटे फाइनेंशियल सर्विस आउ कोन लोन गोटे फाइनेंशियल सर्विस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में किया आछो ना बैंक एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी फाइनेंशियल मार्केट रे कोन आछो ना मनी मार्केट कैपिटल मार्केट मनी मार्केट कैपिटल मार्केट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रे कोन आछो ना बॉन्ड शेयर शेयर डिवेंचर ये सब आज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोले ये चारिटा प्रकार जिनस मिसला पर इट विल गिव यू फाइनेंशियल सिस्टम कोन कहले ये चारटा जिनस मिसला पर इट विल गिव यू फाइनेंशियल सिस्टम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोन ये सब मनथियो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन बैंक को अगेन डिवाइड इनटू शेड्यूल कमर्शियल बैंक नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक डेवलपमेंट बैंक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एंड ऑल दोस शेड्यूल बैंक रहला शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स एसबीआई नेशनलाइज्ड बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स nationalized banks like your Canada Bank and all. Private sector banks मुझे भी ICICI, HDFC. मतलब foreign bank रे मुझे भी ABN AMRO, City Bank. मतलब regional rural banks like उत्कल ग्रामीण बैंक बाजूटा थिला तमरो कोन OGB ओडिशा ग्राम्य बैंक है ना ये सब रहिले. Now these are the banks. Now scheduled commercial bank को गुडा को now which are listed in the second schedule of the RBI Act. Direct question. Scheduled commercial bank now which are listed in the second schedule. Now what is the difference between scheduled commercial bank and non-scheduled commercial bank? देखो जोड़ा second schedule ले list होई जंदी से माने हेले RBI Act 1934 they are scheduled जोड़ा कटे list हेई नांती से जोड़ा कले कोन non-scheduled bank है ना. तो एग्जांपल यार non-scheduled के ना जम्मू कश्मीर बैंक. चलो एबे गोटे पहला पॉइंट को नेक्स्ट गोटे कांसेप्ट को आसुची bank nationalization. What factors led to nationalization of bank? Long question ko asuchi. Long question ko asuchi. What factors led to banking nationalization? Ko what factors led to bank nationalization? Bank nationalization केवल 1969 during the prime ministership of Mrs. Indira Gandhi. तो nationalization अर्थ प्राइवेट ओनरशिप टाको हटे कि नेशनल ओनरशिप आनियो. nationalization अर्थ कोन यार अर्थ हो प्राइवेट ओनरशिप हटे कि नेशनल ओनरशिप आनियो. नेशनल ओनरशिप आनियो को कहजे नेशनलाइजेशन. बैंक इज नेशन इन इंडिया नो एटा केबे हला कहली ना एटा हला 1969 केबे हला एटा 1969.
ओके तो नेशनलाइजेशन केबे हैला ना एट द एंड ऑफ ट्रबल डिकेड किए 1969 ने नेशनलाइजेशन है ता पूर्व समझ जाते 1962 इंडो चाइना वार 1965 इंडो पाकिस्तान वार 1962 इंडो चाइना वार 1965 इंडो पाकिस्तान वार सो ये जो दीटा वार हैला इंडो चाइना इंडो पाकिस्तान वार यार इंपैक्ट बहुत अधिक पड़िला पब्लिक फाइनेंस ऊपर बा नेशनल एक्सचेकर ऊपर कौन कहली यार इंपैक्ट पड़िला बहुत अधिक कहा पर ना पब्लिक फाइनेंस ऊपर देन ए समय टू सक्सेसिव इयर्स ड्रॉट मध्ये देखियो बोल सो इट लेड टू food shortage so it compromised the national security then it compromised national security because of dependence on the American food shipment तापर आसला 3 year plan holiday 1966 to 69 66 to 69 3 year आसला कौन ना plan holiday it affected aggregate demand as public investment was reduced it affected the aggregate demand as the public investment reduced the 1960s 70s it was the lost decade for India as the economic growth barely outpaced the population growth and average income standard stagnated. Now in 1960s 70s it was not good year for India. This time period was not good for India. Okay. Industry share in credit disbursed by commercial bank almost doubled between 1951 to 68 from 34 to 68%. Now this is the scenario of Indian economy during this decade. This is the decadal scenario. This समय 1961 to 70 कथा हम डिस्कस करते हैं 1961 to 70 ये टाइम पीरियड कथा हम डिस्कस करते 1961 to 70 टाइम पीरियड कथा हम डिस्कस करते Now this was a turbulent year for India, agreed? It was a turbulent year for India, Now there was continuous disturbance, 1962 war, 65 war, then 69, 6 to 69 plan holiday, flood, drought. So economically, Indian economy was during this period, Indian economy was mostly devastated. Mostly it was devastated and destroyed. So sethipai asila kona bank nationalization. Bank nationalization hela par benefit kona ho? What are other regions? कौन बेनिफिट होना फर्स्ट इज सोशल वेलफेयर कौन कहली फर्स्ट इज सोशल वेलफेयर सोशल वेलफेयर अर्थ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यार अर्थ कौन यार अर्थ होची सोशियो यार अर्थ ला कौन यार अर्थ ला सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रास्ता घाट पानी बिजुली इटो को हम कहू रोडवेज रेलवेज इलेक्ट्रिसिटी ड्रिंकिंग वाटर सेफ ड्रिंकिंग वाटर ऑल दिस थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड कहीं ना बैंक ए जगह इन्वेस्टमेंट करे पूर्व बैंक कर बिकॉज दैट वाज अ प्राइवेट बैंक एवं प्राइवेट बैंक हवा द्वारा प्रॉब्लम कौन होता प्राइवेट बैंक मत को प्राइवेट बैंक इन्वेस्टमेंट करिवो ना करिवोनी प्राइवेट बैंक ये सब रे इन्वेस्टमेंट करिवो ना करिवोनी yes or no if yes why if no why प्राइवेट बैंक ए इधर सब इन्वेस्टमेंट करिवो ना करिवोनी ना प्राइवेट बैंक रो ऑब्जेक्टिव कोन प्राइवेट बैंक रो बेसिक ऑब्जेक्टिव होची प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन what is the objective of private bank objective of private bank is profit maximization है प्राइवेट बैंक रो बेसिक ऑब्जेक्टिव है कोन ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन
तो ये सोशल वेलफेयर रे इंटरेस्ट देखैबन, इट विल नॉट शो इंटरेस्ट इन सोशल वेलफेयर। देन कंट्रोलिंग प्राइवेट मोनोपोली, केवल प्राइवेट सेक्टर बैंक को कंट्रोल करथला, एटी गवर्नमेंट आफ्टर नेशनलाइजेशन गवर्नमेंट विल इंटरफियर। कोन बेटी आफ्टर नेशनलाइजेशन गवर्नमेंट विल इंटरफियर, गवर्नमेंट इंटरफियर करिवो एटी, हां कि नहीं? यस, नेशनलाइजेशन पर गवर्नमेंट इंटरफियर करिवो। नाउ बैंकिंग टा पूर्वरु इट एक्जिस्टेड ओनली इन अर्बन एरिया। कोठला बैंकिंग फैसिलिटी, बैंकिंग टा कंप्लीटली अर्बन एरिया रे थिला। ये कहूँ एक्सपांशन, बैंकिंग फैसिलिटी विल बी एक्सपांडेड टू रूरल एरिया। कोठी बैंकिंग फैसिलिटी टा कोठी जीवो, कोठी एक्सपांड जीवो ना, बैंकिंग फैसिलिटी विल बी एक्सपांडेड टू रूरल एरिया। इट विल बी ये रूरल एरिया को एक्सपांड हो, क्लियर? रूरल एरिया रे बैंक नथिला। देन रिड्यूसिंग रीजनल इंबैलेंस। नाउ अर्बन रूरल डिवाइड मु ऑलरेडी कहली कि बैंक existed only in urban area, banks कोठला ना only in urban area। now ebe after nationalization it will be there in rural area, after nationalization it will be there in rural area। तापर ये रूरल इंडिया को, रूरल एरिया को आसी। देन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। नाउ व्हाट इज पीएसएल ना, जो सेक्टर गुडाकर ग्रोथ पोटेंशियल अछि, दोज हु हैविंग पोटेंशियल, द सेक्टर्स हैविंग पोटेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, हैला। You qualified prelims, Devasis. Now there is a student support team. Please talk to the student support team, they will guide you। the student support team अच्छी पूरा गोटे, से पूरा गाइड कर दो, डोंट वरी। they will guide you, ସେମାନେ ଗାइड କରିବେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। in fact I will raise your query, I will forward your query to the team, don't worry, है ना। then PSL कहली कौन ना, PSL in India agriculture sector and its allied activities, they are the largest contributor to the national income। in agriculture and allied activity they are the largest contributors to the national income। so PSL ले आउ को सेक्टर आछन ना, हम कोई PSL आछे एग्रीकल्चर वाला, MSME, कॉटेज इंडस्ट्री, हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, है ये सब आसवे, ये सब आसवे। नेक्स्ट इज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। नेक्स्ट इज सेविंग्स मोबिलाइजेशन। और सेविंग्स मोबिलाइजेशन कौन? जोटा गवर्नमेंट बैंक पाखे सेविंग्स रहिबो ताको यूज कर दे फॉर अदर पर्पस। इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट आइडियल, आइडियल करके पकेवा पके, इट इज बेटर टू यूज इट। कौन कर, इट इज बेटर टू यूज इट, को यूज कर पारे, बुझेला ना। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ नेशनलाइजेशन? बैंक नेशनलाइजेशन पर हमको बेनिफिट कौन मिलला? बैंक नेशनलाइजेशन पर हमको बेनिफिट कौन मिलला? प्रथम कथा नेशनलाइजेशन पर branches of public sector approximately raised to 800%, 800% increase in deposit and advance it, so huge jump by 11,000%। कितने huge jump by 11,000%। देखो ब्रांच बढ़ी गला केते, पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया रोज टू approximately 800%, in deposit and advances took a huge jump to 11,000%। डिपोजिट बढ़ी गला, देखो केते केते अधिक डिपोजिट बढ़ी गला।
Next, now government ownership under a banking under government ownership, it gives the public implicit faith. Public faith asibo because bank is owned by government, so public automatically they will increase the deposit. Public deposit टा केतବେଳେ बढ़ेबो जो तार faith asibo, complete faith asibo कि नहीं it is owned by the government, जेहेतु इटा owned by government, so मु इन्वेस्टमेंट कले मते किछि असुविधा नाही माने मो पैसाटा बुडीबनी, पैसाटा बुडीबनी. Now, banks are no longer confined only to metropolitan areas. केवल metropolitan area को इटा confine है कि ना रहिला. Now it is spread to rural India. So it shows financial inclusion. कौन देखुछ ना, it shows financial inclusion. मुझे ला inclusion कौन, what is financial inclusion? Okay. Now clear. What are the benefits of nationalization? The nationalization upare किछि question जदि वो इटा पुराना topic, but it is a potential question. Now in the same way, latest है कौन ना bank merger, SBI and Associates merger in 2016. SBI approved merger of operations with 5 of its associate banks and Bharatiya Mahila Bank. So SBI asset कौन है after this merger, SBI asset jumped to 21.50 lakh crore, एतिकरू to 28.25 lakh crore. 21.5 to 28.25 lakh crore. Number of branch increased from 16,500 to 21,500. The number of branch kete increase hai. Now what are the benefits for bank? What are the benefit for bank? Bank pai benefit कौन होला? What are the benefits for bank? Bank pai benefit एटी कौन होला? First important point is large coverage. है branch coverage है large coverage कौन ना branch रो coverage है माने expansion है branch expansion. Then small banks can go up to the international standard. You got small banks like Bharatiya Mahila Bank, जो बैंक केवे भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को जाई पार नथांते, they reach the international standard. Professional standard improvement. बैंक ट्रांजैक्शन इंटरबैंक ट्रांजैक्शन मध्ये कमी गला केना सेम धरो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर को टंका पठौतलो आ इंटरबैंक ट्रांजैक्शन गुडा को रिड्यूस हे गला. आउ कोन बेनिफिट ना, देयर इज रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस. कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कमी गला. रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस रिड्यूस हे गला. एंड साइज ऑफ ईच बिजनेस एंटिटी आफ्टर मर्जर दैट विल इंक्रीज. Business entity merger पर business entity increase है गला. After merger, Indian banks can manage their liquidity, short term as well as long term. Then economy by these are the benefits for bank. These are the benefits for bank. Now what is the benefit for the economy? Economy angle ले कुछ benefit है क्या मो? Economic angle ले कुछ benefit अच्छे. Yes ये कुछ it will diversify risk management. जेहेतु एते गोटे branch बा bank मिशी गले, जेहेतु एते गोटे बैंक बा ब्रांच मिशी गले ये कौन करू ना, इट विल डाइवर्सिफाई रिस्क मैनेजमेंट. ये रिस्क मैनेजमेंट को डाइवर्सिफाई करे. जो गुडा को बड़ा बड़ा पोस्ट लाइक सीएमडी एमडी जोनल मैनेजर ये सब गुडा को अबोलिश गला, ये सब गुडा को मिशी गला. गोटे बैंक पे गोटे थिला, बहुत गोटे बैंक पे गोटे हे गला. सो एठी मनी सेव करि पाला बैंक गुडा को कौन कर पाले, बैंक्स दे कैन सेव देयर मनी. ना गवर्नमेंट पे व्हाट इज द बेनिफिट फॉर द गवर्नमेंट? ना जो गवर्नमेंट ऊपर बर्डन थिला टू रिकैपिटलाइज बैंक, जो बैंक को गवर्नमेंट एट रिकैपिटलाइज करथिला से बर्डन पळेला गवर्नमेंट पर. सो बैंक्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिकैपिटलाइज. कौन बोले बैंक्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिकैपिटलाइज. So burden on the central government to recapitalize public sector banks again and again, it will come down substantially. Now Basel III norms जोड़ा NPA थिला non performing asset, याको हमें adhere करि पारले easily. Non performing asset टाको reduce करि पारले. Monitoring regulation ये सब easy है. Monitoring and regulation ये सब easy है. Now is this clear? The merger ऊपर question आछे किछि लिखियो.
ताले मर्जर हैला पर पुनी आउ थरे मर्जर हैला पब्लिक सेक्टर बैंक्स अगेन पब्लिक सेक्टर बैंक्स मर्जर जोटी वेयर गवर्नमेंट शेयर इज मोर देन 51%. ये मर्ज कौन कले आफ्टर मर्जर इन 2020 नंबर रिड्यूस फ्रॉम 27 टू 12 केते गला नंबर रिड्यूस फ्रॉम 27 टू 12. 10 banks amalgamated to 4. Now this is the list of 12 banks. The list of 12 banks: PNB, CBI, IOB, UCO. You can see here. बुझेला? Any doubt? बुझेला? यदि डाउट अछि को ना आउ गोटे क्वेश्चन एटी आसी पारे फंक्शंस ऑफ आरबीआई हैला फंक्शंस ऑफ आरबीआई यदि क्वेश्चन आसे डायरेक्टली हियर यू शुड टॉक अबाउट मॉनिटरी फंक्शन ऑफ आरबीआई and second talk about the general function of RBI. Monetary function कौन? What are the monetary functions of RBI? Now first is bank of issue. बैंक नोट इश्यू किए करे इंडिया रे बैंक नोट इश्यू केमती एनपीए कमिला एनपीए को दे कैन मैनेज एनपीए इजीली बुझिला उत्तम नॉन परफॉर्मिंग एसेट दे कैन मैनेज द नॉन परफॉर्मिंग एसेट इजीली मु बुझे दउची तो जोडा स्मॉल बैंक्स सेमानकर नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज मोर when they धर भारतीय महिला बैंक रो नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज मोर when it is merged to SBI रो रिकवरी मेथोडोलॉजी इज स्ट्रांग बुझिला SBI कोन करिवो ना रिकवर करि परिवो स्ट्रांग वे रिकवर करि परिवो कौन कहली एसबीआई स्ट्रांगली रिकवर कर पारे सो भारतीय महिला बैंक रे एनपीए कमी गला भारतीय महिला बैंक बिकम एसबीआई नो एसबीआई रो रिकवरी मेथोडोलॉजी इज स्ट्रांग सो ऑटोमेटिकली एनपीए रिड्यूस बुझिला नाउ बिग बैंक्स their recovery methodology is strong and they have international presence भारतीय महिला बैंक छोटो बैंक ये केबे भी यार इंटरनेशनल प्रेजेंस क्रिएट करि पार नथा जस्ट बिकॉज इट मर्ज्ड विथ एसबीआई यार इंटरनेशनल प्रेजेंस रहिला हैला क्लियर उत्तम बुझेला उत्तम तापर ये कहला कना मॉनिटरी फंक्शन ऑफ आरबीआई फर्स्ट इज बैंक ऑफ इश्यू नाउ एक्सेप्ट 1 रुपीस नोट एंड कॉइन ये कौन बोलते एक्सेप्ट 1 रुपीस नोट एंड कॉइन अलगा गुडा सब किए करछन आरबीआई नो बैंकर एंड डेट मैनेजर टू द गवर्नमेंट ये डेट गवर्नमेंट कौन करि परिबो ना व्हेन एवर गवर्नमेंट वांट गवर्नमेंट कैन टेक ओवरड्राफ्ट फ्रॉम आरबीआई government can take overdraft from RBI and this overdraft is called ways and means advance WMA बोलिया को कहा जाए overdraft को कौन कहते that overdraft is called ways and means advance and it is interest bearing government has to pay interest on this is simply overdraft facility now this is bankers bank this is bankers bank ये बैंक मानक पई बैंक this is bankers bank हैला बैंकर्स बैंक माने बैंक माने दिस लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बैंक माने को टंका दरकार दे विल अप्रोच आरबीआई जेतो बैंक माने को टंका दरकार से माने कहा पाखर आनी दे विल अप्रोच आरबीआई बुझिला नेक्स्ट custodian and manager of foreign exchange custodian and manager of foreign exchange के ना RBI ना controller of credit means it decides liquidity it was CRR SLR repo reverse repo ये सब गुड़ा को ये डिसाइड करो all these are decided now general function कौन supervisory function and promotional function supervise it completely supervise the banking industry and promotes the banking industry now ये देखो control of credit जोड़ा हमें देखले credit control दी प्रकार गोटे quantitative method रे हमें देखुचे amount of money in the economy amount of money in the economy हैला बुझिला क्वालिटेटिव रे कौन देखुचे हमें
क्वालिटेटिव रे डायरेक्शन एंड यूज, डायरेक्शन एंड यूज ऑफ मनी एटा हम देखछो क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मेथड दी प्रकार, गोटेला कन्वेंशनल आ गोटेला नॉन कन्वेंशनल मेथड। ना कन्वेंशनल मेथड रे कोन आसीबो, नॉन कन्वेंशनल रे कोन आसीबो, व्हाट कम्स इन कन्वेंशनल एंड व्हाट कम्स अंडर नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल आसे बैंक रेट पॉलिसी, ओएमओ, वेरिएबल रिजर्व, सीआरआर, एसएलआर। नॉन कन्वेंशनल सो एलएफ, रेपो, रिवर्स रेपो, एटा कोन, the rate at which RBI gives loan to bank and RBI the rate at which RBI takes loan from bank, एटा रेपो रिवर्स रेपो रे हम देखु छी, कोड एटा रेपो रिवर्स रेपो रे देखु छी। देन एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, या को डिटेल्स मु डिस्कस करूनी बिकॉज़ लॉन्ग क्वेश्चन ले लिखिया पड़िबो ना, प्रीलिम्स एस्पेक्ट मु चिबिनी। एंड ओएमओ, सीआरआर, एसएलआर रे कोन लिखिबो, एटी सीआरआर टा विथ द आरबीआई, एटा हो एसएलआर विथ बैंक, SLR with bank. So cash reserve, the total NDTL, net demand and time liability, what a percentage bank has to keep with RBI. That is CRR. Now SLR rakhi kono, either gold or bond or direct cash, किसी भी SLR, statutory liquidity with the bank vault itself. ये कोड रहो ना, ये बैंक रा कोड रहो, ये बैंक रा vault रहो, बुझिला, बुझिला कि नहीं? क्लियर? लिखियो बुझी होची ना, एटा कष्ट लागुची मते को ना, देखो केते गुटे टॉपिक कवर कले हम एते कम समय में, अनेक गुटे टॉपिक कवर कले हम, कौन कौन टॉपिक कवर कले जस्ट रिकैप, मो रिकैप देखै दोची, आ ये नोट्स को समस्त डाउनलोड करी नहीं परिबे, इट अवेलेबल इन द टेलीग्राम चैनल, डाउन टेलीग्राम चैनल कंप्लीटली अवेलेबल हे जो। फर्स्ट टाइम डिस्कस कले गोटे क्वेश्चन, डिस्कस हिस्ट्री ऑफ डिजिटल पेमेंट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इंडिया रे डिजिटल पेमेंट रिवॉल्यूशन केमती हिच, को एंगल ले हिच, कौन कौन उपाय रे हला, तो केमती फाइनेंशियल लैंडस्केप को ये चेंज कला, बुझियला। देन गवर्नमेंट की ड्राइवर्स ऑफ रिवॉल्यूशन ने हमें कौन कौन देखले ना, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कौन अछि, फिनटेक इकोसिस्टम कौन अछि, फिनटेक इकोसिस्टम देखि कंपनी फोन पे, गूगल पे, योडा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रे हम पाखे कौन टेक्नोलॉजी अछि देखले। गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाइक गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज लाइक प्रधानमंत्री जन धन योजना, यूपीआई क्यू यूज करबा, डिजिटल इंडिया, ये सब। इंपैक्ट कौन, ट्रांजैक्शन ग्रोथ कौन है, पूरा करेंट डाटा 2025 रो डाटा देछि, याको लिखियो परीक्षा। मर्चेंट एडॉप्शन केमती बढ़िला, फाइनेंशियल इंक्लूजन केमती बढ़िला, कंज्यूमर बिहेवियर केमती बढ़िला, हैला। बेनिफिट्स चैलेंजेस, कौन कौन बेनिफिट है डिजिटल पेमेंट रो, व्हाट आर द चैलेंजेस डिस्कस कले, मन पड़छ कि नहीं। देन फाइनेंशियल सिस्टम रे देखिली, फाइनेंशियल सिस्टम कौन, तापर हमें डायरेक्टली आसिले बैंक, व्हाट फैक्टर्स लेड टू बैंक नेशनलाइजेशन, बैंकिंग नेशनलाइजेशन कौन पाई हला 1969, व्हाट आर द कॉजेस, नाउ ए कॉज गुडा को तुम पाई बहुत इंपोर्टेंट मन रखी। एंड बैंक नेशनलाइजेशन नो बेनिफिट कौन मिलला, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन। देन देखला मर्जर ऑफ एसबीआई एंड एसोसिएट्स, मर्जर पर बैंक को कौन बेनिफिट, इकोनॉमी को कौन बेनिफिट, पब्लिक सेक्टर बैंक हेगला मर्ज पर। देन वी डिस्कस्ड अबाउट functions of RBI. Now another important question, functions of RBI, monetary function, and I discussed about the general function, monetary function और general function ऊपर discuss करें, then controller of credit ऊपर ही discuss करें। Clear? Quantitative, qualitative methods. Clear? No doubt. Clear? Any doubt? Any doubt?
ताले ठीक कौन देखले आज डिजिटल पेमेंट रिवॉल्यूशन, then we discussed about RBI and role, bank nationalization, SBI and merger. है ठीक अच्छे एति पढ़ पढ़ी के आस पुणी काली डिस्कस करिया आउ किछि नुवा कॉन्सेप्ट। ठीक अच्छे आउ किछि नुवा कॉन्सेप्ट डिस्कस करिया आसंता काली क्लास। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, गुड नाइट। नोट्स को डाउनलोड करके समस्त नहीं पारिबे। नाउ बेनिफिशियल होची आंसर राइटिंग रे जति इंपोर्टेंट डाटा दउची करंट अफेयर रिलेटेड डाटा दउची सो बेनिफिशियल होची ये सब पढ़ियो हैला। चलो ठीक है, ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू, गुड नाइट।